वेलकम गाइस, वेलकम टू द स्ट्रीम। और आज हम खेलने वाले हैं हेलब्लेड सेनुआ सैक्रिफाइस। और ये एक गेम है, डार्क फैंटेसी एक्शन एडवेंचर गेम बोल सकते हैं इसको। और ये एक ब्रिटिश वीडियो गेम पब्लिशर है निंजा थ्योरी, उनकी तरफ से ये गेम पब्लिश की गई थी। और ये नॉर्स मिथोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। नॉर्स मिथोलॉजी के बारे में मुझे भी इतना नहीं पता, लेकिन नॉर्स गॉड जैसे कि आपने बहुत सारी फिल्मों में भी देखा होगा, और हॉलीवुड की फिल्म्स बनती हैं नॉर्स मिथोलॉजी के ऊपर, गॉड्स डेमी गॉड्स जिसमें होते हैं। और गॉड ऑफ वार में भी काफ़ी सारे नॉर्स मिथोलॉजी से रिलेटेड कैरेक्टर्स दिखाए गए थे। तो ये यही है बस। इस गेम के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है। और ये गेम वैसे 2016 में रिलीज़ हुई थी, 17 में रिलीज़ हुई थी, सॉरी, प्ले स्टेशन 4 और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के ऊपर। और कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है मुझे इस गेम के बारे में, बस इतना पता है कि एक डार्क फैंटेसी टाइप गेम है। और क्या करना होता है कोई आइडिया नहीं है मेरे को इस गेम के बारे में। और एक साथ ही हम एक्सपीरियंस करेंगे, देखेंगे इस गेम को कैसी है ये गेम। और मैंने अभी परचेज़ की थी ये गेम। और ये गेम थी मेरे ख्याल से सेल में थी, तब मैंने परचेज़ की थी, तो मेरे को थोड़ी सस्ती मिल गई थी ये गेम। बाकी ये गेम अनरियल इंजन 4 के ऊपर बनी है, तो इस वजह से ये गेम काफ़ी स्मूथ है। और 60 FPS मिल जाते हैं मेरे को। तो डेफिनेटली अनरियल इंजन पर बनी ज़्यादातर गेम स्मूथ ही होती हैं। तो लॉन्च करते हैं गेम को और लेट्स सी। और आई होप आप लोग गेम की स्क्रीन देख पा रहे होगे। जस्ट वेट। जस्ट वेट गाइस, आई थिंक आप देख नहीं पा रहे हो स्क्रीन को। ओके, फॉर सम रीजन तो आई थिंक अब आप देख पाओगे। लेट्स गो। Hello. Who are you? Doesn't matter. Welcome. You're safe with me. I'll be right here, nice and close so I can speak without alerting the others. Let me tell you about Senua. Her story has already come to an end, but now it begins anew. What's happening? It's breathing. The head. It's breathing. It's breathing. He knows she's getting closer. He can feel her coming closer. She's getting closer. They're watching. The head. They're watching. They're watching. This is a
journey deep into darkness. They're watching. There will be no more stories after this one. What is she doing? Why is she doing this? They're watching. Why They doesn't can she feel you turn coming. back? She's doing this for him. She wants to rescue him. He's already They can dead. feel you coming. Quiet. Oh, how rude of me. I never told you of the others. You hear them too, right? They've been around ever since the tragedy. Well, that's not quite true. Some are old, some are new, but they've changed. I think the darkness changed them, just like it changed her. Can you see them? Over there. Why isn't she looking? Why aren't you looking? Look, up ahead. You see it too? You promised you came. Yes. It is real after all. She's finally arrived in the land of mist and fog. The place the Northmen call Hell. Turn back. Go back. Go back. It's not safe. Go back. Go back. Go back. Go back. It's not safe. It's them. They're here. Can you see them? You can see it. Look around and you will see them. The drowned, the sick, the slain. Here they lie, rotting in the fields and rivers of hell. But the dead don't always lie still here. This is not a place of rest. Can't do this. Go back. Go back. They're going to do that to you. Can you see them? Can you see them? They're going to do that to you. They're watching. Stop. Can you feel them watching? They're watching her. They're watching her. You're so close to the darkness. Go back. Can you feel it? What is she thinking? I can tell you. She's afraid. Wouldn't you be? You'd think she would get used to it by now after so many years. But the darkness, it just builds onto itself, growing stronger, towering over her. You might try and ignore it, turn away. But it's always there, just out of sight, where you're most vulnerable. It's like it knows that just enough light is all you need to see its suffocating power. They can feel you. You might think she's brave to go on this journey on her own, but it isn't bravery that drives her. Bravery only means something to those afraid of death. Senua's fear runs far, far deeper. What is she looking at? What is she leaving behind? I know what she's
too late to get into the boat and go back. No one will judge her. No one will ever know. Oh, she heard us. There's no going back. You can't do it. Senua pushes away a world that conspired to cause so much suffering. There's nothing to go back to, and worse to look forward to. Why don't you join us? Maybe you too have a part to play in this story. Wow, dude. ये कैसी ये कैसी इंट्रोडक्शन थी ये। और अभी से काफ़ी मिस्टीरियस लग रही है मेरे को ये गेम। और ये करेक्टर है सेनुआ, और ये गेम है हेलब्लेड। डूड, क्या गेम है ये। तो अभी जैसे कि कुछ एक वॉइसेस थी जो कि हमें गाइड कर रही थी, तो मेरे को लगता है ये वॉइसेस सेनुआ के साथ रहती हैं। ये कोई स्पिरिट्स हैं या ये मन की आवाज़ है सेनुआ के अंदर की। पर ये इतनी सारी आवाज़ें, और इस जगह पे सेनुआ कर क्या रही है, यहाँ पे आई क्यों है। और इस रिवर के बारे में भी उन आवाज़ों ने कुछ बोला था कि हेल्स रिवर, ऐसे ही कुछ बोला था ना, पता नहीं। ये मतलब डेड लोगों की दुनिया है ये, और यहाँ पे ये डेड लोग जिंदा भी हो जाते हैं कई बार। पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे भाई। और ये लोग ऐसे क्यों लटका रखे हैं इन लोगों को। बड़ी भयंकर मौत मारा गया इनको। एक तो नंगल लटका रखा भाई, जूतड़ों के बीच में से निकाल दिया डंडा भाई साहब। तो गेम तो काफ़ी अच्छी लग रही है, एटमॉस्फेयर भी काफ़ी अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है गेम में। कंट्रोल्स में देख लेता हूँ भागने के लिए। ओ भाई, पीछे कितनी क्यूट लग रही भाई पीछे आते हुए। वाह, अच्छी एनिमेशन है यार। ओके, आगे बढ़ते हैं। Use your eyes. Use your eyes. Come closer. She can't focus. Why can't she focus? Take a closer look, Senua. कैसे? Do not forget my stories, Senua. Do not forget my stories, Senua. Because your darkness comes from hell, and your fate lies there. They say the burning of a corpse will take you straight to Hela's gate, but gods and the living will follow this path. You must leave the Isles of Orkney across the eastern sea and find a road that leads north and down through deep, dark valleys. After 9 nights of riding, you will follow a great river and will find a bridge covered in gold. The path to Helheim goes from there, across the River of Knives that flows from the dark world of Niflheim. ओ भाई, ओ भाई ये भी बड़ी खतरनाक लग रही है सैनू को भी। तो ये क्या चल क्या रहा है यार ये। हम स्वर्ग में जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ही कुछ है, या नरक में, ऐसा ही कुछ बयान कर रहे थे। मतलब नॉर्स मिथोलॉजी के हिसाब से इन्होंने जगहों के नाम लिए, नेल्फेगेम पता नहीं क्या नाम था भाई।
तो 9 दिनों की, पता नहीं 9 रातों की जर्नी के बाद रिवर क्रॉस करते हुए, पता नहीं कौन सी रिवर थी, नाम भी बड़े अजीब से थे। तो जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ क्यों जा रहे हैं ये भी नहीं पता मेरे को, और इसके आगे करना क्या है इसका, इसको इंटरेक्ट नहीं कर सकते। थोड़ी सी स्टटर हो रही थी भाई, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। ठीक ही है, एक मिनट मैं इसको देख लेता हूँ ग्राफिक्स में, फुल स्क्रीन है ना, हाँ। अच्छा क्या है, कंट्रोल इंटरेक्ट एफ, फास्ट स्ट्राइक, ओके। भाई यहाँ स्टटर हो रही थी। ओके आगे बढ़ते हैं फिर। ये कौन था, अजीब सी आवाज आई थी एक। ओ भाई अकेली लड़की निकल पड़ी है, हड्डियां टांग रखी हैं। तो यार एक तो ये आवाजें जो आती है ना बार बार, ये परेशान कर देंगी मेरे को। इसको लाइट अप नहीं कर सकते? नहीं। कौन आ रहा है? Darkness is coming. Yearns for life. Hungers for it. Like a pack of wolves on a hunt. But she's not stopping. अभी ये क्या है? Not this time. ठीक है, सब ठीक हो गया? दूर क्या चल रहा है ये? Can you see it? The land of mist and fog. He's in there. The old fool was right. He's in there. You see him? What was it he said? The river of knives across which lies the halls of hell. The place they call Helheim. He's lost. He's lost. Where are you? I hear you. He's there, you know it. There's no doubt about He's it. lost. The source of the darkness is in Helheim, You'll never find him. They're calling and the goddess Hela holds his soul there. Her dear beloved, Dillian. ओके ओके, अब समझ आ गई बात। डिलियन है जिसकी की मुंडी लटका रखी है सेनुआ ने, तो उसको मार के यहाँ पे हेल मतलब कि नरक में, नरक ही है ये शायद, यहाँ पे लेके आया गया और उसकी सोल को यहाँ पे कैद किया गया, अल्लाह ने कैद किया उसको। और सेनुआ आई थिंक उसे वापस लेने के लिए आई है, उसे वापस जिंदा करने के लिए आई है आई थिंक।
ऐसे ही कुछ लग गया प्लॉट। तो आगे बढ़ते हैं भाई। मुश्किल होने वाला सफर, ऐसा होता नहीं है वैसे। तो मर गया भाई। Why is she doing this? Why doesn't she turn back? She's doing this for him. He's already dead. हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। His soul is in Helheim. His soul still lives. She needs to save his soul. She wants his soul to be at peace. She needs to lay him to rest. He's already dead. The bridge to Helheim. I forget its name. She forgets too. But she does remember that only the dead may cross it. That part wasn't so easy to forget. The old fool said there was a hidden path up to it. Let's see, shall we? हिडन पाथ, यही लग रहा भाई। हाँ यहाँ पे एक और ये है। The Northmen speak of 9 worlds. The world of men they call Midgard. Sky gods dwell in Asgard. The gods of earth, harvest, wind and sea dwell in Vanaheim. The good elves dwell in Alfheim. The evil ones dwell in Svartalfheim. The mountain giants dwell in Jotunheim. The fire giants dwell in Muspelheim. Niflheim is the world of ice and darkness. Only the dead dwell in Helheim. And that is where you must travel. हेलहाइम, यहाँ पे मरे हुए लोग रहते हैं। वाह कहाँ लेके जा रहे हो यार। रास्ता भी टूटा हुआ है। और मेरे को पता नहीं हर गेम में कलेक्टिबल ढूंढने का क्या चस्का रहता भाई। यहाँ पे कलेक्टिबल देखने आया था कि कुछ मिल जाए। एनीवे आगे बढ़ते हैं। वैसे आज मैं ज़्यादा देर तक स्ट्रीम करूँगा नहीं, क्योंकि काफ़ी लेट स्ट्रीम कर रहा हूँ। तो वाओ यार, एक तो ये आवाज़ें बड़ी अजीब सी हैं। एक बात अच्छी है, आवाज़ें प्यारी लग रही हैं। ये समर टाइप। अगर कोई भयंकर आवाज़ होती फिर तो भाई परेशानी कर देना था। डोंट लुक डाउन क्यों भाई? वहाँ पे जाना आई थिंक हमें। What's she waiting for? Turn around. ओके इससे आगे कैसे जाएंगे? You're not safe. वो भाई अटक ही गया यहाँ पे। Do you know where you are? Where are we? एक मिनट। Turn around. अच्छा भाई कोई वो नहीं आ रहा। Why did she do that? She shouldn't have done it. You're not safe. Go back now. No, this is it. The hidden path.
What the hell? ये कैसा दरवाजा भाई? He's going to hurt you. It's dangerous. Don't kill me. I'm not one of them. Don't listen. I was just hiding. I find I live longer that way. Don't listen. I'll never let the bastards catch me again. Never! Wait. Who are you? It's just a memory. Drew? Is that you? For my tales of the Northmen, they call me Druth. A liar. He's lost. An old fool. Truth is my truth. It's good to see you again. You kept your vow. Guide you in this life and the next. I will tell you my stories of hell, if I may walk with you. Tell me your stories again, old friend. I'm listening. The ये कौन है? runes seal the gates to hell. Focus your inner eye, and you too will see what's hidden in plain sight. Okay. Focus करना ना? Look closer. Look. Use your eyes. I can see one. She needs to Hold look it in your closer. mind's eye. Find one like it to open the gate. He's not right. Look for it. Okay, करना क्या ये? It is secret. ये क्या हुआ? Stop. You'll never find her. Secret. ये कैसा सिंबल आ रहा है भाई? मिनट। एक मिनट, ये गायब हो रहा है सिंबल आगे जाते ही। Look towards the gate, and the gate will open. एक मिनट, यहाँ कुछ था क्या? भाई मैंने तो ऐसे ही I don't know मैंने क्या किया भाई। ओके, जो रेड कलर होगा तो गेट ओपन नहीं होगा। The gate is open. Go through the gate. Go through it. It's dangerous. Follow it. What's behind the gate? Where will it take you? It works. I spent 6 years enslaved in hell, but I watched the Northmen, learnt their ways. I know you did. You listened when everyone else laughed. My people paid a heavy price. Carry my stories with you, and together we will make the Northmen feel our fury. Another voice joins us. She once tried to make them go away. Pretend they weren't real. But what good is that? When we are always here. ओ भाई क्या क्या गेम है भाई ये।
बाकी एटमॉस्फेयर तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और स्टोरी थोड़ी सी अजीब है. It's the same with heights. You can stand on the edge, pretend it's going to be okay. But you know that death is near, waiting for you to make that little slip. ये क्या था? ओके, कुछ गलत किया मैंने. क्या बैलेंस करना है क्या मेरे को? अच्छा, वाओ. You can't fall. If you fall, you will die. भाई सही है यार. ये सही था यार, अच्छा लगा मेरे को. पहली बार देखा है कि ऐसे किसी लोग को क्रॉस करते हुए बैलेंस करना पड़ रहा है हमें. ये चीज़ किसी और गेम में मैंने देखी नहीं है. The world of the dead is ruled by the giantess, Hela, daughter of Loki. The gods feared her bloodline, bad on her mother's side and yet much worse on her father's. So, as a child, the All-Father cast her down into Helheim and gave her power over those who die of sickness, age, hardship, and self-slaughter. In all of the 9 worlds, only Hela can resurrect the dead. To Hela, your Dillion was sacrificed, and with her you must bargain. ओके. तो हेला ही है जिसने डिलियन की सोल को कैप्चर किया हुआ है. और हेला जो है वो उसकी लड़की है. क्या बोलते हैं उसको? वो कौन सा गॉड था यार? थोर का भाई लोकी. तो ओ भाई मत जा. यही गलत आ गया मैं. तो आगे बढ़ते हैं. ओ भाई साहब, नॉर्स मिथोलॉजी में भूल गया था ये गॉड भी है. नीचे जाना है या इस तरफ जाना? अच्छा, इस तरफ तो कुछ भी नहीं है. ओके, कुछ ज़्यादा ही अंधेरा हो गया यहाँ तो. ओ भाई सब कुछ नज़र ही नहीं आ रहा. Stay back. Look at it. You have to open it. The gate to Helheim divides the living from the dead. Is that the face of Hela herself? The half-rotten goddess that rules over Helheim. Whatever horrors lie behind that door, she must find him. ओके, ऐसे तो खुलने नहीं वाला ये. कुछ ना कुछ होगा इसका भी. Someone's here. Took him from me. I beg you, let him go. I'll give you what you want. I won't resist anymore. Just give him back.
ओ भाई ये कौन है? He's done. Finish it. Finish it. Strike him. ओके ये क्या? ओ भाई ये तो गायब ही हो चुके हैं। ओए नो 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 नो। Behind you. इनको कैसे मारूं मैं? They're winning. ओ नो। ओ भाई साहब ये क्या बना दिया यार? ये स्क्रिप्टेड है कि? अच्छा स्क्रिप्टेड है ये। A vision of what's to come. Poor Senua. The darkness does not bargain. It does not reason. It is rot. And now it has taken hold. It will spread towards her head, the seat of the soul, until there is nothing left of her. All of God. her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time. काट दे भाई हाथ को। The dark rot will grow each time you fail. अच्छा सिर तक नहीं पहुंचना चाहिए और सारी प्रोग्रेस जाएगी। What the hell? The hardest battles are fought in the mind. That is what Dillian taught her. With every defeat, the dark rot will grow and soon it will take her soul. But for now, at least, she still has control of her mind. And she will fulfill her vow. Whatever the cost. He's not real. Listen to me, Senua. The goddess Hela lies behind the gate to Helheim. To open the gate, you must first face the gods that guard it. The god of fire, Zurt, and the god of illusion, Valravan. Spill their blood to open the gate to Helheim and enter the land of the dead. ओके तो पहले इन दो गेट्स में से निकलना होगा मैं। It won't open. How will she get through? Why won't it open? Why can't she open it? She needs to challenge the gods. She has to fight two gods first. Two gods. Two gates. Which will she choose first? One of them will kill her, I know it. She's going to die. Uh-oh.
Which one will she challenge first? Be very careful, Senua. Choose a gate, Senua. 2 gates, 2 gods. She's too strong. Surt, the fire giant has answered. He comes from a land older than mankind. And the Northmen call upon his flaming sword to raise their enemies to the ground. Find him, Okay. Senua, and spill his blood. भाई किसी गॉड से फाइट होने वाली है, लेट्स गो। और ये आसान नहीं होगा मेरे को लग रहा है। ये रास्ता कहाँ जा रहा है? Wretched old fool on her way back from the wilds. An outcast. Was badly burnt all over. ओके, एक ही जगह जा रहे हैं दोनों रास्ते आई थिंक। नहीं, For he was not long for this world. Like her, who spoke of his own darkness. ये बैरल्स को नहीं तोड़ सकते। The Northmen tell this story. Before the earth was created, there was a world called Muspel. Because it was in the south, it was bright and hot, flaming, burning. Sparks that flew out from Muspel became the stars. Other sparks melted ice in the frozen world of Niflheim, creating the body of the first giant, Ymir. Muspel is one of the 9 worlds, and is now the land of the fire giants. And people from elsewhere cannot endure a journey there. ओके, इसका क्या मतलब है? भाई कहीं और से लोग वहाँ की जर्नी कर नहीं सकते हैं। एक बार और सुन लेते हैं भाई, अजीब सी कहानी है। The Northmen tell this story. Before the earth was created, there was a world called Muspel. Because it was in the south, it was bright and hot, flaming, burning. Sparks that flew out from Muspel became the stars. Other sparks melted ice in the frozen world of Niflheim, creating the body of the first giant, Ymir. Muspel is one of the 9 worlds, and is now the land of the fire giants. And people from elsewhere cannot endure a journey there. ओके, फायर जाइंट है। उनके अलावा वहाँ पे कोई नहीं जा सकता। जा तो सकता है, मतलब सरवाइव नहीं कर सकता वहाँ पे। तो मेरे को नहीं पता, रिस्क लेना चाहिए। और ये कौन है? इधर तो नहीं कुछ है। Senua, we each walk these lands gazing towards different horizons, some of us further than others. Your father cannot see what you see, but there is nothing wrong with seeing the world the way you do. ओके, डेलियन इसका फादर है, इसका पापा। इसने कुछ तो कहा है, तारीफ करी है हमारी भाई। बाकी उससे होगा क्या? कोई बेनिफिट तो होने नहीं वाला। लेट्स सी। ये रास्ता कहाँ जा रहा है?
ओके, ये गेट तो मेरे को लग नहीं रहा खुलने वाला है, तो या ऊपर देख लेते हैं क्या है। भाई हर तरफ लाशें बिछा रखी हैं यार, वो तो क्या होंगी क्योंकि ये वैली ऑफ डेड्स 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 नहीं डेड है, वैली ऑफ डेड। ये क्या आइटम है? इसका क्या करना होगा? हेलो, इसके ऊपर चढ़ सकते हो? नहीं। तो ये क्यों है रास्ता, मतलब ये वाला यहाँ आने का पर्पस क्या है? पर नो, गेट की तरफ ही चलते हैं फिर। बड़ी धीरे भाग रही है यार ये। ओ भाई, Take him down! Take him down! Get down! You want it? ओ भाई मैंने डॉज किया है। They've surrounded you. Not strong enough. ओके, सुबह भी हो गया तो अच्छी बात है ये तो। और ये पजल है तो I can still smell it. The sweet, sickly stench of burning human flesh. And I still hear their cries carried in the wind. Do you hear them too, Senua? Yes, I heard their screams, and I still hear them now. It's it. Look for it. The screams will help you. Screams. Sacrifice. It's the secret. You can hear the rooms. Can you hear them? Screaming, find the rooms. Find them. ये है क्या? See it. The rooms. Follow the screams. Screams. The screams will help you. Screams. ओके, The rooms. ये काम मिलेगा। You can hear the rooms. Can you hear them? Screaming, find the rooms. Find them.
कौन सी आवाज़ें आ रही हैं यार? ये कह रहे हैं कि कोई आवाज़ें आ रही हैं और उन आवाज़ों को सुनो। Are they screaming? कहाँ पे है पजल? Screams will help you. Screams. ओके, स्क्रीम हल्की हल्की आवाज़ें आ रही हैं लेकिन वो ऊपर आ रही हैं, ऊपर से। Are they screaming? You can hear the rooms. भाई ये चुप करें तो कुछ सुनाई दे। The rooms. ओ भाई बहुत मुश्किल है सुनना। ये बकवास कर रहे हैं ना कानों में। और डायरेक्शन समझ नहीं आ रही है किस तरह से आ रही है आवाज़ें। The rooms. Screams will help you. ये है क्या? Follow the screams. You can hear the rooms. Follow the screams. Are they screaming? एक मिनट। The screams will help you. Screams. एक मिनट। The rooms. It's it. अच्छा 2 लेटर थे। ओ भाई The rooms. Are they screaming? The screams will help you. Screams. एक मिनट। इस डंडे का भी कोई रोल है। You can hear the rooms.
has opened. जस्ट वेट गाइस, मेरे को थोड़ा सा डिले नज़र आ रहा है स्ट्रीम पे। ओके, यहाँ तो सब ठीक है। When they first came to my lands, I knew enough of their tongue to beg for mercy, and they took me as a slave. I wish now that they had slaughtered me like the others. I rode their storm of fire, death, and slavery to many lands. This darkness you speak of, I know it well. And I'm still here to fight it. ओके, तो अब थोड़ा सा मेरे को समझ आ रहा है कि गेम में करना क्या है। तो यही सिंबल वगैरह मेरे ख्याल से ढूंढने पड़ेंगे, और तो मेरे को अभी तक कुछ लगा नहीं। और फाइट जो है वो भी ठीक ठाक ही है, सोर्ड फाइट है, हैक एंड स्लैश बोल सकते हैं इसको। मेन चीज़ है इसका एटमॉस्फेयर, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है और मज़ा आएगा एक्सप्लोर करने को। और ये हिमालय पर्वत की चोटियां नज़र आ रही हैं मेरे को लग रहा है ऐसे। ओके, एक और दरवाजा। अब यहाँ भी सिंबल बनाना है क्या? एक मिनट, ये कौन सा दरवाजा भाई? He can read your hands, Astra. She finished him! Not behind! Too many of them. Find a good position. Don't let them behind you. Behind you. ओके, एनिमीज थोड़े से टफ हो रहे हैं तो अच्छा। ये भी तो इस दरवाजे को खोलते हुए ये लोग हमला क्या? तो इस दरवाजे की तरफ क्यों जब हम बढ़ रहे थे तो तभी इन्होंने हमला किया, ऐसा क्यों? कुछ है इस दरवाजे के इस तरफ? क्या ये सेक्रीफाइस? कैसा सेक्रीफाइस? आवाज आ रही है भाई कुछ। ओहो, पजल है एक और। Hell will not give you the answers you want. But you mustn't look away from the horrors it does offer. Because you cannot overcome suffering if you refuse to look at it.
ओके What's happening? Where's the fire gone? Where's it gone? The fire's disappeared. It was everywhere. ओ वही तो मैं कह रहा हूँ आग बुझ गई The pyre. Cert. Cert is through Waiting there. for you. He's waiting for her. You can't get through. How will she get through? She'll need to find another way. ओके Said, find your own path. There's always another way. Find another path. The Northmen say that the defender of Muspel is called Surt, the foremost of the fire giants. His name means the Black One, because he is like something burnt. The Northmen believe that he sits at the border of Muspel with his flaming sword, and at the end of the world he will leave his post. He will travel to Asgard and Midgard, waging war against all the gods. He will be victorious, and then burn the whole world with fire. कौन था बंदा ये फायर सोर्ड वाला ओ भाई भगवानों से लड़ाई करवा रहे हो हमारी हाँ ये बड़ा देखा मैंने नॉर्स मिथोलॉजी में ना कि भगवान होते हैं उनसे फिर लड़ाई करनी पड़ती है Another gate. She Or- needs to find it. Another fire sacrifice. उनको ही बुरा बना देते हैं Another sacrifice. I don't know. यहाँ पे क्या अब Find the fire, Senua, to follow the path to Surt. फायर It's too far. She'll never find it. She'll never make her way back. She needs to remember the way back. What happens when she finds it? Remember. Everything will burn. Concentrate on where you're going. She needs to remember the path. Everything will burn, then how will she find the way back? She won't. She won't be able to tell. The Northmen believe that the world will be destroyed someday. They call it Ragnarok, the destiny of the gods. Asgard will be attacked by Surt and the fire giants. A monstrous wolf will swallow the sun, and the gods will fight in vain against their enemies. There is nothing they can do to prevent it, but Odin ever seeks knowledge and magic, hoping to find a way to postpone that dark day. के क्या है भाई नॉर्स मिथोलॉजी एक दिन दुनिया खत्म होनी है और ओडिन उसको रोकने की कोशिश में लगा हुआ है जाना किस तरफ है एक ही रास्ता जा रहा है और यहाँ से नहीं जा सकते क्या एक मिनट ये रास्ता कहाँ जा रहा है The Northmen made fire sacrifices, burning slaves like me to reveal the path to Surt. I searched for meaning in their suffering, in their eyes, but they just screamed like helpless pigs. एक और है तो इसे बोलते क्या मेरे को ये नहीं समझ आ रहा
ओ भाई, ओ भाई यही है क्या? Do your gods answer your prayers, Senua? I asked the gods for mercy, all of them, even theirs. None answered. In the end, I set myself free. Defy the gods, Senua! Find your own path, like I find mine! My gods abandoned me. I am alone. ओके, मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी हुआ इतना। गेम भी सेव हो गई है, तो काफ़ी प्रोग्रेस कर लिया आज हमने। तो ज़्यादा लंबी स्ट्रीम वैसे भी मैं आज करने नहीं वाला था, तो यहीं पे रोकते हैं स्ट्रीम को, और जो स्टोरी है उसको कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट स्ट्रीम पे। तो दैट्स इट, मिलते हैं गाइस सर आपको नेक्स्ट स्ट्रीम पे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव फन।